Alright guys, it is day 5. We are checking out of this beautiful hotel. I wasn't really able to cover this hotel as much as I should have. So yeah. So today we'll be heading out to Paro while making some stops at a few checkpoints like Bhutan Museum, simple Bhutan Museum simply, and a fort, as well as a fertility center. Now, I'm not too keen to visit the fertility center. I'll see if it looks very good from the outside. I'll definitely go in, but I'm not too keen on going inside the fertility center checking it out. But देखते हैं बाकी कैसा है. And just look at this beautiful hotel over here. We have spa facility, gift shop, wonderful walking area. हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं फर्टिलिटी टेम्पल में. तो यहाँ बेसिकली होता क्या है कि जो पेरेंट्स बेसिकली बच्चा नहीं कर पाते हैं, जो बैरन होते हैं बेसिकली, वो यहाँ पर आते हैं. उनके मॉम एंड डैड कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हैं एंड दे हैव टू पिक शीट ऑफ पेपर फ्रॉम अ बॉल. और उसके अंदर अगर एक लड़के का नाम निकला तो गारंटीड लड़का होगा, और अगर लड़की का नाम निकला तो गारंटीड लड़की होगी. तो और एक और कहानी ये थी जो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ. बेसिकली एक यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु थे जिन्होंने एक ईवल को मारा था. वो ईवल वाज इन द ईवल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बेसिकली रेड डॉग, और वो गुरु ने उस रेड डॉग को मारा एंड तब से यहाँ पर ये टेम्पल है. सो the story is around these lines. More onto it, I'll definitely try to find something from Wiki and I'll put it in on the video as a caption, or I'll voice over it. But yeah, ये है. तो we did not feel like going to the fertility center. उतना मन नहीं हो रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था अंदर जाने के लिए. तो we just said nope, we won't be going. Entry ticket was 500. There's a 15-20 minutes hike to a point जहाँ से वैली व्यू दिखता है. तो हमारा उतना मन नहीं था, तो we just stayed back and now we are scrolling through some market. Let's see if we can find something good. थोड़े शॉप्स अभी बंद हैं, बट प्राइस यहाँ पर बहुत हाई है यार. आई थिंक द सेम थिंग्स इन पारो एंड थिम्फू. फुट शोलिंग थोड़े कम प्राइस के होंगे, बट यहाँ तो बहुत महंगा है सामान. सो लेट्स सी इफ़ वी कैन गेट समथिंग गुड एंड चीप. We'll buy it. तो यहाँ पर काफ़ी, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बोला था, इंटरेस्टिंग डिज़ाइन एंड शेप्स के चीज़ें हैं. तो बेसिकली ये इसलिए है टू ड्राइव अवे द ईवल आई एंड प्रोटेक्ट होम फ्रॉम मलेशियस गॉसिप एंड ब्रिंग गुड लक एंड फर्टिलिटी. तो ऑब्वियसली आई गूगल दिस, हमारे गाइड ने बोला था. तो जैसे हम लोग रूम के बाहर नींबू और मिर्ची लगाते हैं, दे ऑल हैव दिस इंस्टेड, एंड दिस बेसिकली प्रोटेक्ट्स द हाउस फ्रॉम बुरी नज़र. सो वी आर हियर एट द फोर्ट, द मच अवेटेड फोर्ट. लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. I'll try recording it from inside as much as I can, जितना तक allowed है. बट अंदर जाने के बाद I don't think it's allowed at all to take a photo. You have to cross this bridge to reach the fort, and the fort is situated in a very beautiful place. Yeah. Could you say some facts about the fort, please? Alright, so good morning from Punakha Zong. Today we are making a visit to one of the historic monument of our country. And to tell you one thing, that fortress, or locally we call it Zong in Bhutan, they all been built at least 400 years back. And that's all as a symbol of unification, or like unifying the various provinces and regions in the olden days by one of a great founder of Bhutan.
we refer him as Shabdrung. So he was basically from Tibet, and exactly in the year of 1616, after coming down to Bhutan, as he has been destined to unify all those provinces. So unifying provinces in various part of our country, he built this particular fortress as a symbol of unification. And so as in the olden days, it actually has served as a center of administration. Thank you. Okay. Hello again. We get to see a central tower over here, a gigantic tower in the middle of the fortress. And this is very important, it's very sacred as well. So this has so many sanctums and important chapels in it, and those stores the important relics and the treasure. Okay. So every fortress in Bhutan will have a tower like this. And this basically divides the two most important blocks. The very first block from towards the entrance is the administrative block, particularly for every district in Bhutan. It serves as the center of administration, and that has basically been headed by the CEO. We call it Zonda in our term. Otherwise, he basically represents the king in every district in Bhutan. And for the other block towards the other side of the central tower is the place where we get to see the residential home for the central monastic body, and so as even the important blocks which basically serves as the important chapels that exactly stores the important relics in it. So it indeed is mostly been used by the monks, the central monastic body. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. I know I've been bothering you with my camera, but this is very crucial information Not at for all all. the viewers. Yeah. All right. and All right. Thank It's all you. right. Yeah. Thank you. So behind me is the temple जहाँ पर 3 मूर्ति है पद्मसंभा, गौतम बुद्ध का and the founder. So basically inside this we have 12 different types of paintings which describes the some life journey of Gautam Buddha, कि वो कैसे आए थे, how he got his half enlightenment, then full enlightenment, then he reached heaven to let her mother know that उनको full enlightenment मिल चुकी है, and then he came back to earth to bless us, and everything related about that, and some stories about Padmasambha, कि वो कैसे पद्म मतलब लोटस से पैदा हुए थे, और लॉर्ड इंद्र ने उनको द राजा जो थे उस समय के इंद्र, उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, and basically he went to Nepal, then to Tibet to get some teaching and learning, and slowly he reached Bhutan because उनको वहाँ पर invitation मिला कि आप आइए, we are unable to contain the evil here, तो आप यहाँ पर आके evil spirits को हमारे लिए contain करिए और ख़त्म करिए. So this monastery has all of that. Entry fee of this monastery is 500 per head. अच्छा, but now all the stories are somewhat repetitive, and the architecture is now looking similar all across. So Interlocking the wooden pieces together. See, इसका अंदर देखो, बहुत सारा holes वगैरह है. यहाँ क्या होते हैं, ऊपर like they usually used to dig holes and then dig. At times all those various wooden pieces have been interlocked together. अलग-अलग wooden pieces interlock करके, then we basically frame out the window frames, door frames, and so as अगर if ये वाला जो pointed वाला design देख रहे हैं ना, you might feel it like it's a design. It is of course a design, but it's also a part of the architecture. I mean the structure. जैसे नीचे देखने में तो it's all made of the beams. जो beams का head है, ठीक है? So it has basically been framed out into a design. नीचे तो if you just look into the inside, it's all the beams that actually holds the ceiling, that actually holds the flooring from the above. ठीक है? तो ये क्या होते हैं? It's all part of the structure, but those structures when it comes out, we basically showcase, we basically frame out into a proper design, which we call it as our unique Bhutanese architecture. Locally we call it as rafsel. These are basically the rafsels. Okay? Rafsels basically meaning the idea of interlocking the wooden piece together to frame out a design, and so as being a part of the structure, we call it a unique design structure. So guys, we are here at Dochla Pass. We are heading towards Paro from Thimphu. मतलब Thimphu के पास होते हुए पारो जाएंगे तो बीच में दोचला पास पड़ा है, and this is 30 kilometers away from Thimphu, और this is basically this was basically constructed to honor the soldiers, on the brave soldiers who
who lost their lives basically in the military action, and yeah, this has been created to honor them. और इसको 108 स्तूपास भी बोलते हैं. तो हाँ, यहाँ पर आए हैं. दिस इज़ 3000 feet above the sea level, तो obviously बहुत ठंडा है. And behind me is Nauchula Pass के स्तूपास. And yep, everywhere you go, you definitely see the mountains, you see the clouds. So that's always there in Bhutan. कभी भी कहीं पर भी जाओगे वो तो दिखेगा ही व्यू में. And yeah. एक फार्म हाउस में है जहाँ पर भूटानीज ट्रेडिशंस के बारे में बताएंगे. उनका कोई डांस फंक्शन होगा, म्यूज़िक होगा. कहाँ चले गए मिस्टर किन्ने हमारे? How much is it? 2 hours or 2 hours? We came here by नहीं ना. तो गाइस अच्छा खासा जा रहा था वहाँ बैठने. ठीक है यार, गर्मी लग रही है. मैडम जी ने यहाँ बुलाया. जादू बने घूम रही है एक तो, हरा जादू. अरे भाई क्या हो रहा है आपको? ऐसे कांप क्यों रही हो? बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है आपको. ये क्या है? ये क्या था मिस डॉक्टर? I'm giving blessings to everyone. Blessings to fire. To everyone. डॉक्टर साहिबान आज थोड़ी ज़्यादा ही उल्टी कर दी लगती है. पर कल नींद तो बहुत अच्छी आई. आई ना, सी आई टोल्ड यू टू रिकॉर्ड. मानते नहीं यार. Please give us big cup. बड़ा कप दे भाई, पूरे पैसे दिए हैं. अरे मिस्टर दोरजी, Big cup. बिग कप. छोटा हो गया. हाँ ले लो, और भाई पूरे दिए क्या हैं. प्रॉब्लम है? और बड़ा चाहिए ले लो, टूटेगा. ये लो ये लो ये लो, छोटा वाला तो रखो. नहीं ऐसे ऐसे. अरे ये तो इसका भाई है. मिला क्या है इसमें? क्या मिलेगा? बटडी बटडी. जो देता है वो बनेगा. बाबा यही सचमुच आप इंडियन बन गए हो. हाँ, खरंच खरंच. अब भी सब देख के हम भी इंडियन हो गया. तो बड़ा पाव है, भूटान में वड़ा पाव? बड़ा पाव. हम महाराष्ट्र से. मला इक्वल वड़ा पाव. You got brown. This is not sweet, na? No, no, it is not. This is roasted rice. Little more. खा के बुरु बुरु करो. हाँ. मग डाटा बंद कर. डाटा बंद कर. नाही नुसतं नाही खायचं. क्या दिया? नमक चाय. ऑटोमेटिकली ऑनलाइन बटर दी. ये इसमें जाएगा, ये अलग है. इसमें जाएगा. कंपेयर जो स्टोर है लगे ऑनलाइन कंपेयर. थैंक यू. What? स्टार्ट स्टार्ट. So now we gonna start our program. क्वाड्रेंट से पैसा दिया है ना. थैंक यू. हमको कुछ नहीं चाहिए. This is good combination. Butter tea, मक्खन चाहिए. अरे कोलकाता में ना कैसा खाते हैं, मूढ़ी डाल के, पफ्ड राइस डाल के चाय में वो खाते हैं. ओ Kind अरे of, डांस yeah. डांस चालू हो गया क्या?
Oh. गौ माँ को प्रणाम कर लेते हैं। So this is our room for tonight. Pretty basic. We got a heater, a TV, and a huge balcony. तो देखते हैं इसका व्यू कैसा है. Yes, garden tray. I picked up this new word. I hope I'm pronouncing it correctly. Even if I'm not, I'm sorry, but I'm trying to learn. And I'm really enjoying Bhutan. I'm liking Bhutanese people. They're really nice. And yep, we'll straight off head for dinner. Yep. And show you what's there for dinner. We'll be staying here for 2 nights. So, bye bye. So, we are heading to the restaurant right now. And I'll show you what's there for lunch. What's there for dinner. Let's first find a place. Non-vegetarian. We have chicken, roti, very limited stuff, but I'm hoping the food tastes good. So let's get that taste. Oh my God! Wow! Oh, it's very good. All chana chicken. Alright. I'll see you guys back in room. I'll finish my dinner.